त्याचबरोबर इकडे आगमन झालंय शैलेश केरकर आणि त्याचबरोबर निलेश साळगावकर यांचं सुद्धा अगदी मनपूर्वक स्वागत। घेऊन जाऊयात मैदानात अपाली कलंगुटकर ॲज युजुअल ॲज ऑलवेज परंपरे प्रथेनुसार पहिलं अनिवार्य पावलं झटक घेऊन येतोय बॉलिंग मार्कवर। सलामीची जोडी सिद्धिविनायक मांजरेम संघाच्या बाजूने आपण पाहतोय। राम योगेश आणि शुभम ही सलामीची जोडी। पहिलं षटक मात्र पॉवर प्लेचं 2 कडे जोडी सर्कलच्या बाहेर दिसत आहेत। अपाली कलंगुटकरच्या हातामध्ये आहे चेंडू। डाऊन दी ग्राउंड मिड ऑफला चेंडू आलाय आणि रोहित जोपर्यंत करेल फेकी तोपर्यंत 1 रन। या संपूर्ण स्पर्धेचे सर्व ज्यांनी ही संपूर्ण स्पर्धा प्रायोजित केली आहे मांद्रेब सरपंच प्रशांत उर्फ बा नाईक यांच्या हस्ते संपूर्ण स्पर्धा ही प्रायोजित। बक्षीस तर आहेतच आणि त्याचबरोबर अजून एक वैयक्तिक बक्षीस सर्वाधिक षटकार खेचणारा फलंदाज आणि सर्वाधिक बळी मिळवणारा वेळंदाज यांच्या सद्दी सुद्धा इकडे पारितोषिक आहेत। 11,111 रुपयाचं पारितोषिक। तर नक्कीच सर्वाधिक षटकार जो टोलवेल सर्वाधिक विकेट जो घेईल त्यांना 11,111 रुपयाचं पारितोषिक असेल। म्हणजे बक्षिसांची खैरात 2 लाखापर्यंतचा प्रवास अजूनही सुरू आहे 2 संघांकडून। बॉलला इकडे फ्लिक केलंय आणि चेंडू हा सीमारेषेच्या जवळ ऋत्विक जोपर्यंत फील्ड करतोय चांगली फिल्डिंग आणि चांगला नाट्यमय परिवर्तन झालं मैदानावर। जिकडे बाउंड्री जाते की काय असं वाटत तिकडे अगदी आपल्या शरीराला झोकून दिलं आणि गॅस्पर कडे बॉलला थ्रो गॅस्परने सरळ केला तो म्हणजे बॉलरच्या थेट हातामध्ये आणि त्याचबरोबर तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज हा माघारी परततोय तो म्हणजे शुभम हरमलकर। ती जागा स्वीकारण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाकडे पावलं वळवतोय। गेल्या मॅचचा हिरो सावळाराम गावडे काय ते षटक लेफ्टी बॅटरला वारा असताना सुद्धा त्याने एक चांगलं षटक टाकलं होतं। 12 चेंडू 16 धावा साईश जोरे मैदानावर आणि तरी सुद्धा तो सामना अपोनेंट संघ जिंकू शकतो याची कल्पनाच कोणी केली नसेल। ते अशक्यही शक्य करून दाखवलं या सिद्धिविनायक मांजरेम संघाने आणि त्यामध्ये सिंहाचा मोलाचा वाटा होता याच खेळाडूचा। पंचांचा इशारा येतोय 9चा त्याचबरोबर 22चा इशारा येतोय पंचांचा इकडे आमच्यापर्यंत निर्वाळा। अपाली करंगुटकर कडनं अशी गचाळ फेकी ही खूप कमी वेळा पाहायला मिळते। फ्री हिटचा चेंडू असेल। स्वीप करायचा प्रयत्न फाईन लेगच्या गॅप मध्ये चेंडू फील्ड केला जाईल प्रितेश शेट्ये आणि दुसरी धावही पूर्ण। 1 शॉट ओके येस अंपायर 1 शॉटचा येतो इशारा आणि लेग बायस आपण एक धावेनेची धावसंख्या पुढे पधारेल। 6 धावा रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट बॉल चाललाय बॉल जाईल कोणासाठी थांबणारा नाही कारण शॉट तेवढी जेवढी ताकद पुरेशी होती। अपाली कलंगुटकरच्या विरोधात अटॅक ओपन फायर पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या झाली आहे 10 धावा। पुन्हा एकदा पॅडल स्वीप या अगोदर रिव्हर्स स्वीप आणि आता पॅडल स्वीप। ऋतिकचे शर्तीचे प्रयत्न पुन्हा एकदा निष्फळ ठरतायत। आज चेंडू जाईल तिकडे एकच नाव
सलगच्या 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार हे लगावले जात आहेत. सावळाराम याचकडून धावसंख्या झाली आहे ती 14 धावा. पहिलं षटक झालंय समाप्त आणि सांघिक धावसंख्या परावर्तित झाली आहे ती म्हणजे अर्थात 14 धावा. गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होते गोलंदाज सुचित नांचे. फील्ड सेट मध्ये बदलाव करण्यात येतोय. सूर्यास्त अगदी आपल्या वेळेवर, त्यामुळे कठीण हे नक्कीच होईल बॅटिंग करणं या वेळेत. पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा होता प्रयत्नात आलं अपयश. षटकाची झाली आहे सुरुवात सुचित नांचेची एका निर्धाव चेंडूच्या सहाय्याने. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप, वारंवार रिव्हर्स स्वीप करण्याचे प्रयत्न हे निष्फळ ठरत आहेत. सावळारामच्या बॅटला इकडे चेंडू अगदी मिडल होत आहे, त्यामुळे सावळारामला ती जबाबदारी द्यायला हवी मोठे फटके मारण्याची. आणि जर त्याला ही जबाबदारी द्यायची आहे तर सिंगल घ्यावी लागेल. आणि पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. हे निर्धाव चेंडू संजीवनी स्वरूपात येत आहेत. नुकसान भरपाई अपाली कलंगुटकरच्या पहिल्या महागड्या षटकाची. हा मात्र चांगला कनेक्ट झालाय की नाही. झेलखाली फील्ड रॅन आणि अजून एक सुंदर झेल आपण पाहिला. नेत्र दीपक, डोळ्यांचं पारणे फेडणारा झेल. खूप मोठं अंतर डीप मधनं आला. 38 सर्कल 4 मध्ये रोहित. चांगलं झेल टिपण्यात येतंय आणि चौथ्या चेंडूवर फलंदाज झालाय बाद. धावसंख्या रखडली गेलीये ती मात्र 14 या आकड्यावर. गेल्या सामन्याचा अनसंग हिरो, 2 जे त्याने मोठे फटके मारले होते. त्याचबरोबर इकडे सिद्धिविनायक मांजरेला पूर्ण संघाला एक पारितोषिक घेतोय माजी खेळाडू संजय नागवेकर याचकडून. जर मांजरेम संघ हा सामना जिंकला तर त्या संपूर्ण सामन्यात जेवढे पण षटकार डोलवले जातील त्यांच्याकडून आणि जेवढे विकेट्स घेतले जातील त्यांच्या बॉलर्स कडून त्या प्रत्येक षटकार आणि विकेटला 100 रुपयाचं पारितोषिक जर मांजरेम हा सामना जिंकला तर. आल्या आल्या मोठा फटका. गेल्या मॅचचा रिप्ले दत्ताराम उर्फ टीटो. नाम में क्या रखा है इंसान काम से जाना जाता है. संत असलेला डगाव पुन्हा एकदा घेतो. धाव लेग साइडला चेंडू. अपाली कलंगुटकर दुसरा करण्याचा प्रयत्न. रनआउट संधी नशीब साथ देत आहे. धाव संख्या झाली आहे 22 धावा. या षटकात निघाला एकत्रित 8 धावा. जे षटक वाटत होतं कदाचित निर्धाव जाते की काय, त्या षटकाला परिवर्तित केलं. 8 धावांच्या एका षटकामध्ये धाव संख्या झाली आहे 22 धावा.
नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय गॅस्पर फर्नांडिस। 4 ओवर्स का ये खेल, तीसरी ओवर तक ये मैच जाती हुई। स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े सावळाराम। इस बार स्कूप करने का प्रयास किया था, स्कूप तो नहीं चढ़ा। बिल्कुल अपने बैट को एक रैम की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास, लेकिन गेंद निकलती हुई डॉट के स्वरूप में। गैस्पर की बिल्कुल बढ़िया शुरुआत। इस बार ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहता, लेकिन यहां पर रीच करना चाहते थे जरूर गेंद तक, और इसी प्रयास में शायद से गेंद बिल्कुल बल्ले के बगल से गई, इसलिए इस गेंद को वाइड नहीं करार दिया गया। ये गेंद खड़ी हो गई है, नीचे खिलाड़ी है हेरम शेट्टी, करेंगे नहीं कोई भी गलती। नया बल्लेबाज कृपया आप जल्द से जल्द जाए, क्योंकि अभी भी यहां पर एक पूरी की पूरी इनिंग होनी बाकी रहेगी। स्कोरबोर्ड जो कि बनता हुआ मात्र 22 रन। एक तो 4 ओवर्स का मुकाबला, और उसमें से आपने पहले 3 ओवर्स में ही 7 गेंदे डॉट खेल दिए। इसका मतलब ये तो अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। जी हाँ, जरूर बड़े शॉट निकले हैं, लेकिन जिस बल्लेबाज ने बड़ा शॉट लगाया था वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर ही है। दत्ताराम बिल्कुल क्या सोचकर आए थे, आज सुबह क्या खाकर आए थे, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने की कोशिश। अनसंग हीरो रहे थे पिछले मैच के, उन्हीं की 2 बड़े शॉट की बदौलत 50 रन तक पहुंची थी सिद्धिविनायक मांद्रेम, और उनके पास भी अगर स्ट्राइक जाए तो बिल्कुल मजे ही आ जाए। आठवीं गेंद डॉट जाती हुई, बिल्कुल इसी प्रकार की ओवर डाली थी पहले चरणों तक सुचित नानचे ने, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर मार पड़ी। क्या वैसा ही होगा या फिर इस बार कुछ अलग करेंगे गैस पर? स्कोरबोर्ड रुका हुआ, मानो कील ठुक गई हो। गेंद खड़ी हो गई है, फिर एक बार क्या कॉटन बॉल फॉलो थ्रू में ले लिए, एक बिल्कुल बढ़िया कैच, फॉलो थ्रू कंप्लीट किया, बॉल को जज किया, समय था उनके पास, और एक और निकला है। क्या इस प्रतियोगिता की पहली डबल विकेट मिडन ओवर देखने का अवसर प्राप्त होगा? आखिरी गेंद बची है, स्कोरबोर्ड रुका हुआ 22 रनों पर ही। नए बल्लेबाज की हैसियत से जाएंगे चेतन सावंत। इस बल्लेबाज ने भी एक बड़ा शॉट लगाया था, बूंद बूंद से सागर बना। हर एक छक्के के साथ स्कोरबोर्ड 50 तक पहुंचा। अगर एक बल्लेबाज भी एक शॉट लगाकर चले जाए तो भी यहां पर काम बनेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज हानिकारक है, और वो है डॉट गेंद। डॉट गेंदे जहर की तरह होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने डॉट गेंदे खेली और कब स्कोरबोर्ड कम बना। ये वाइड का इशारा, ये निराश है गैस पर, निराश इस बात से, क्योंकि ये गेंद वाइड है। निराश इस बात से है, अपना नाम इतिहास में दर्ज करते करते रह गए। स्कोरबोर्ड बनेगा 24 रन। ये वाइड गेंद बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक अच्छी गेंद थी। अंपायर ने कहा ये गेंद आप मार सकते थे। इसी के साथ मात्र 2 गेंदें डाली है, तालियां जरूर बजेंगी इस बॉलिंग के लिए वजीरिम टीम की ओर से। 2 गेंदे, माफ कीजिए 2 विकेट और 2 रन। शायद ये हो सकती थी पहली डबल विकेट मेडन ओवर, लेकिन इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिरी ओवर रहेगी, स्कोरबोर्ड रुका हुआ मात्र 24 पर।
आखिरी गेंदबाज रोहित सावळ। पहली गेंद स्लोअर वन, बिल्कुल आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में स्लोअर वन का ये बिल्कुल एक अच्छा ट्रेंड जारी हो रहा है। यॉर्कर का इस्तेमाल तो गेंदबाज कर ही रहे थे, लेकिन स्लोअर वन भी बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज को अपेक्षा होती है एक तेज तर्रार गेंद, लेकिन सामने आती हुई कछुए की चाल चलती हुई गेंद, उसी गेंद के साथ की है शुरुआत। ये लो फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल वेस्ट हाइट के नीचे फुल टॉस थी ये गेंद। एक रन मिलेगा उस गेंद पर। अब रसल मसल की भूमिका निभानी पड़ेगी। स्कोरबोर्ड बन चुका है 25 रन। दत्ताराम एके टीटो स्ट्राइकर एंड पर। फुल टॉस गेंद। भाई इस खिलाड़ी को कहां रखा था और क्यों रखा था? इतना निचले क्रम पर तो बिल्कुल अगर पहले आते तो शायद ये जो स्कोर अब है 30 पर 31 पर, वो शायद 60 का आंकड़ा भी पार कर सकता था। इकतीस रन स्कोरबोर्ड पर। दत्ताराम कहां पर गेंद डाले ये सोच रहेंगे रोहित। फिर एक बार बड़ा शॉट, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव। जहां पर भी पड़े फर्क नहीं पड़ता। शायद बल्ले में बटन है, बटन दबाओ छक्का गया। हर गेंद जो आ रही है वो हर गेंद यहाँ पर सीमा रेखा के बाद। दत्ताराम स्कोरबोर्ड बना है 37 रन। क्या पहली सिक्सर हैट्रिक देखने का अवसर मिलेगा? गेंद गई है डाउन द ग्राउंड। दो फील्डर्स यतीश करेंगे फील्ड उस गेंद को, और रनआउट के स्वरूप में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे वापस। स्कोरबोर्ड जो कि बना है 39 रन, 39 रन ऑन द स्कोर कार्ड। गैस्पर का वो ओवर मात्र 2 रनों का, और ये ओवर 5 गेंदे डाल चुके हैं और 15 रन खर्च कर दिए। टारगेट डिफाइनिंग बॉल। फिर एक बार ये बड़ा शॉट। ये भले ही इनकी हाफ सेंचुरी पूरी ना हुई हो, ये रन किसी हाफ सेंचुरी से कम भी नहीं है। 7 गेंदे और 28 रन। अगर आपसे कोई पूछे एक्सप्लोसिव बैटिंग किसे कहते हैं, तो बस उन्हें इस इनिंग का वीडियो बिल्कुल वैसा ही कारनामा किया है। गैस पर ओवर बढ़िया था, लेकिन उस ओवर के बाद वजरीम कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। थैंक यू। पर फंदा डाला था सामने वाली टीम पर, लेकिन आखिरी ओवर जो कि आखिरी कील की तरह निकली। दत्ताराम के 3 बड़े शॉट, स्कोरबोर्ड पहुंचा कुल 45 पर, और 46 की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदे और 46 रन। तो बिल्कुल आज के दिन से मैं विदा लेता हूं।
At one stage, it looked like won't be crossing 30. But then that final over produced 21 runs. Tito Dattaram made 28 of just 7 deliveries. Yes, Suchit Nanche facing Gokul Das. Swings, misses, dot delivery. Suchit Nanche along with Apali Kalangudkar in the middle. 46 runs required to win in 20 deliveries now. So 2 runs a delivery. Double the asking rate. 23 deliveries and 46 runs required to win. Good delivery, dot ball. Excellent bowling. Again trying to go downtown, missing it completely. Gokul Das starting off the proceedings from the Bandeshwar temple end. Again, really good bowling. Will just be a single. Right in the block hole. Just a single. Totally dependent on these two in the middle. Apali and Suchit Nanche. Both these men can get off to a flying start. Certainly have provided it in the previous game. But they are held back nicely by Gokul Das in this innings. Apali yet to face a delivery. 3 deliveries, 1 run. Down the ground. Apali Kalangudkar. And it's just been pulled in. No, that's gone for 4. Boundary. Score moves on to 5. Swings, misses, dot delivery. Again looking, this time over square leg. Missed it completely. 5 deliveries, 5 runs. Reverse sweep. Appealing. Keeper looked fine with the appeal. So does the bowler. And seems to be fine. Usually Apali Kalangudkar walks when he nicks. And he's an important wicket right now. So 5 runs have been conceded off that first over. Another 3 overs left and needing 41 runs to win. So 18 deliveries and 41 runs required for BSC Ozrim. Nicely flicked. In the air, chance and taken. Backward is square. Shubham gets the wicket. And the first wicket down in form of Suchit Nanche. It's 5 for 1.
So new man in is Abhi. Both the brothers in the middle. Abhi along with Apali. Shubham has picked up the wicket on the very first delivery. Let's see if he can get the back of Abhi as well. Chance of a run out. Oh, gone. Another wicket falls. This game is turning and turning pretty quickly. Since that, the last over of the batting innings of Siddhivinayak Mandrem. And now, first over considered just 5 and 2 wickets in 2 deliveries. First by Shubham and now a run out. Abhijit has to head back for a diamond duck. It's 5 for 2. Yatish is the new man in. He's at the non-striking end. So all depends on Apali Kalangutkar now. Still needing 41 runs to win. Another 16 deliveries left. Cut away. Will just be a single. Rightly so, Apali Kalangutkar just turning it over to Yatish. He knows exactly what to do. Calm head in the middle. As far as the Siddhivinayak Mandrem are concerned, along with their supporters, they are pop a hoop at the moment. In the air, and is it gone all the way? Or is it a boundary? Seems to be a boundary. So just been confirmed by the umpire. We are looking. Just a minute. We are just confirming. That's a boundary. So 4 more to the total. Score moves to 10. In the air. Oh, just falling short, and the batsman has slipped at the non-striking end. So 13 deliveries left, 35 runs to get. A game of 6 big hits. And Apali Kalangutkar is capable of hitting them. As far as the Mandrem, Siddhivinayak Mandrem are concerned, they need a tide over from somewhere. That will be a wide. Yes, extras. Supporters getting behind the Siddhivinayak Mandrem. They need the local team to win to meet the Mandrem boys in the quarterfinals too. Reverse sweep, missed. Really good delivery to end the over. Just conceded 7 runs and the prize wicket of Suchit Nanche along with the run out. So after completion of 2, it's 12. 12 for 2 after 2. So 12 deliveries left and 34 runs to get. 34 runs required to win in 12 deliveries. 17 runs per over. Requesting the teams not to take too much of time. Sun is really beating down. We won't get anything from this light. There are no lights provided. There are no floodlights being presented by the
organizers. So please make it as fast as possible. Also requesting the umpires to get on with the game as early as possible. So tomorrow it will be Pop 11 Morjim taking on Mention Boys Anjuna. Then Kudneshwar Kudne taking on Sateri Maton. Rajaram Warriors will be taking on Kolware. Here's Sauraram Gowde bowling the penultimate over, requesting not to take time. Here's Sauraram Gowde, 34 required in 12. Swings, misses. Dot delivery and will be a wicket at the other end. Yatish has to head back. Main importantly, Apali is still out there. You just never know. He is the man. So new man in is Pritesh. .34 required in 11. Apali Kalangudkar has just been joined by Pritesh at the other end. Nick, and is it gone? Yes, gone. Shell-shocking events in the middle. And Apali Kalangudkar has to head back to the pavilion. Very much enjoy the supporters of Siddhivinayak Mandram with that wicket of Apali. So new man in is Gaspar Fernandez. Can he turn his magic over against Sauro? Down the ground, straight to the man. Will just be a single. One over, completely changing the course of the entire game. Last over produced 21 runs in that innings. Still needing 33 runs in 9 deliveries. Good delivery again, right in the block hole. Excellent bowling this. Has got the confidence from the last game. Defending 9 runs against the likes of Sai Zore. Was an infirm batsman. Good delivery again. Onto the feet of the batsman. Will just be a single leg by. The single given by the umpire. $14 runs on the scorecard. Needing 32. 32 in 7. 7 deliveries, 37 runs required. 32 runs required. 32 in 7 deliveries. Lets it go, and that will be a wide. So 31 required. 31 in 7 deliveries. Game of big hits. 6s are needed right now. Can Gaspar power one out of the park? Over mid-wicket maybe. Yes, he can. Is it? Yes, gone. Gone for 6. Needed a 6, got a 6. Score moves to 20.
So needing 26 runs. In fact, 20. So 25 will be required. 25 will be required in the final over. 25 in the final. Requesting the bowling team, please don't take any more time. Get on with the game as early as possible. Please, the umpires, please take note not to take time. "25 runs required. 25 in 6 deliveries. It will be change in bowling. So Dinesh Mamal will be bowling the final over. Man on strike is Pritesh. Needs to give it to Gasper. Or does he have enough power to send this one out of the park? In the air, chance, fielder will take the catch. Savro takes the catch. And the new batsman will be on strike. It will be Hiram coming out to bat. Really good delivery, dot ball. So need to disappear all 4 deliveries out of the park to make it even. Make the scores level. Can Hiram do it? This time in the air, down at cow corner, will just be a single. Score moves on to 22. So needing 24 in 3 deliveries. 3 deliveries, 24 runs required. Just that Dinesh need to be mindful where he is bowling. Just can't afford to give any extras at this stage. Gasper on strike. 24 required in 3 deliveries. "24 in 3. Here's Dinesh. In the air, and that will be gone. Easy catch to Ram Vijay. And Ram Yogesh, and another wicket falls of BSC Ozrim. It's 22 for 5. Tone was set in the final over where he managed to hit 28 runs. Dattaram of just 7 deliveries. Swings, misses, dot delivery. Dattaram Mamal. That's right on the feet. And that's it. Victory for Siddhivinayak Mandrim. So man of the match of this particular game is Dattaram Mamal. 28 runs of just 7 deliveries. Requesting Shri Prashant